अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। One and all present here for today's enlightening session on interaction of divine numerology, motivation and personality psychology. We are gathered here not only to explore the mystical science of numerology, but also to connect it with the profound themes of motivation and personality development. This program promises to be both enlightening and inspiring, bringing together ancient wisdom and modern insight into the human mind and soul. So, let's begin with reverence and gratitude. It's my honor to invite and welcome the esteemed dignitaries who have graciously accepted our invitation and joined us for today's event. With great respect, I welcome Dr. Baburao Mundi, Principal MB Science College, a source of inspiration and academic excellence for us. I welcome the beautiful and enlightening Dr. Saroj Honorary Secretary, a visionary leader and guiding force behind our institution. Please welcome, sir. A personality development trainer and an anchor to please welcome the world-renowned numerologist, motivational speaker and our esteemed guest speaker for the day, Bharat Bhushan Shri Mudigonda Gopi Krishna ji, a respected associate of the speaker and contributor to the field of divine numerology. Please welcome, sir. Is on the dais to kindly come forward for the I now request our respected delegate to please floor. Good evening, everyone. Respected our Joint Academic Director, Dr. Rajesh Agarwal sir, our motivated speaker, Sri Gandhi sir, so my Guru, Bharat Bhushan, Brahmasri, Sri Mudigonda Gopi Krishna Garu, so my dear colleagues, respected head of the sister institutions, I welcome you all to this divine program. Numerology. Numerology is the study of numbers or science of numbers. Numerology is daughter of astrology. So there is a relation between astrology and numerology. In astrology, 9 planets are there. In numerology also, 9 planets are there. Each planet represents a number. Number 1 represents Sun. Number 2 represents Moon. Number 3 represents Jupiter. Number 4 represents, number 8 represents Lord Shanishwara. Number 9 represents Puja. Is also called as Mangala. So, in the numerology, we can relate the numbers, we can combine the numbers with the planets. So, one series, what are the characters of one series born person, what are the characteristics of two born, second born persons, like that. So, I don't like to take more time because
పెద్ద ఆయన ముందు ఎక్కువ మాట్లాడితే హనుమంతుడి ముందు కుప్పిగంతులు వేసినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వదిలిపెడుతున్నా అంతే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Indeed, honored to have with us Shri C.A. Navi Kumar Agarwal ji, our Honorary Secretary. Now, may I request him to share his valuable message with us? Sir, please. This chief guest or speaker and guru of our dear Babura sir, Bharat Bhushan Shri Mudigonda Gopi Krishna, Mr. Gandhi, Academic Advisor Dr. Saroj Jain Madam, Joint Academic Director Rajesh Agarwal, Chief Administrative Officer Aradhana Madani, and Principal of BBMS, Heads of the institution, teaching staff, non-teaching staff. I think some students are also there. आप लोग सब परेशान होंगे आज ये क्या सेशन है, तो थोड़ा कॉम्पिटिशन है, बाद में प्रॉब्लम होगा. मैडम वाई यू पीपल आर सिटिंग, पीछे क्यों बैठे, सामने आ जाओ. टू हैव दिस सेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम. बहुत बार मुझे लेकर पर मेरा मोबाइल नंबर देख के सर ये चेंज करो, ये करो, वो करो. मैं बोला ऐसा कुछ सेशन लगा के आप लोगों के भी कुछ न्यूमरोलॉजी चेंज करेंगे, शिक्षा समिति का कुछ न्यूमरोलॉजी चेंज करेंगे. अच्छा तो हुआ है, बेहतर करेंगे, कुछ बेटर करेंगे. Has become a master in numerology. We can have some more people under the guidance of Gopi Krishna Garu who can learn numerology. Nowadays, astrology, numerology, these are also quite famous subjects. बहुत interesting subject है. Times are like these only nowadays. And today's subject is interaction of divine numerology, motivation and personality psychology. By making some changes in your lifestyle, numbers, or some changes which are suggested by some guru or people like Babura Sahab or somebody, if it changes your life or your mindset and it helps in your growth, that will be very useful. I believe in that. I told that I will try to come. Actually, बहुत काम था, tax season is going on, but I told Babura sir that I will try to come and I thought I must attend. और मुझे पता था 3 बजे के बाद स्टाफ लोग रहेंगे नहीं, थोड़ा मैं आ रहा हूँ तो अटेंडेंस रहेगा. I wanted you people to attend, and if it makes थोड़ा भी अगर 5-10% का भी असर आपकी ज़िंदगी में पड़ता है कुछ चेंज होने से, it does not make a lot of change, just a positive attitude. अगर चेंज एटीट्यूड में चेंज आता है, that makes a real difference. I don't know much of details about that. Sir will be giving total details about the things what happens. ऐसा नहीं है कि एक आधे घंटे में पूरा डिटेल सिखा देंगे या कुछ करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ में आपको पता चलेगा. बट इफ इट मेक्स सम चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, it has a big effect. And I think it's a great thing that Gopi Krishna ji is over here in Agarwal Shiksha Samiti, and I am looking forward to many such sessions. It should not be just एजुकेशनल. मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि हमारे पास खाली पढ़ाई जस्ट बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए. खाली पढ़ाई ही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शुड हैपन, एंड इफ इट अफेक्ट्स 5-10% also for anybody, and then we are successful. Thank you very much.
And once again, I welcome Gopi Krishna ji to Agarwal Shiksha Center. Making us grow professionally or making us grow personally too by arranging these 20 sessions. It's time to introduce the visionary who will be leading us through today's main session. I request Ms. M. Ashita, lecturer in chemistry, to kindly introduce our guest speaker, Bharat Bhushan Shri Mudigonda Gopi Krishna Garu, an internationally acclaimed numerologist, motivator and guide. Everyone, it's my honor and privilege to introduce to you an extraordinary personality in the field of numerology, Bharat Bhushan Shri Mudigonda Gopi Krishna, fondly known as MGK. With over 28 years of experience, MGK is an internationally renowned numerologist and a world record holder, recognized by the Guinness Book of International London for his unparalleled expertise and contributions to the field. He is the founder, director of the MGK Numerology Research Foundation, Hyderabad, established in 1995. Throughout his illustrious career, MGK has trained over more than 2 analysis for love and arranged marriages, business name guidance, and more, using his unique Astro-Numero-Perfect method. His dedication and contributions have earned him several prestigious honors, including the Karma Yogi Award by the Oriental Research Academy, the Star Medal Award at the national level, and the Bharat Bhushan Award. The seminar, Astrologist Talent Scientist, was instrumental in the Supreme Court's recognition of astrology as a Vedic science. Currently, he runs his professional practice, MGK Numerology Consultancy in Nagore, Hyderabad, guiding individuals to. Happy to announce that our Agarwal Shiksha Samiti Asthana numerologist, Dr. Babura Bundi, principal of MP Science College, is the best disciple to today's speaker, Sri MGK Garu. Please join me in giving a warm welcome to Bharat Bhushan Sri Mudigonda Gopi Krishna, BMGK. Thank you. Thank you, Ashita. मैडम क्लोज मैम Principals of Ivy Coding colleges, HODs, lecturers, maybe some professors, maybe some students. You are all, people think that you are all the lecturers or teaching headmasters. Hey, you are the architect of India. You are a sculptors. Because when you get a raw material like a student, when you teach them and you train them from here, one day they become minister, MLA, engineer, another film actor, a heroine, whatever it is there. You are the sculptors, number one. Today I feel very happy to come out here for 2 reasons. One is once a time, 40 years back, in classes we used to sit in the last seat. We used to listen some teachers, high school, and the college and degree in Usmania University, Hyderabad. So today I came from last bench to on the desk. People think that you are all the lecturers or teaching headmasters. Hey, you are the architect of India. You are a sculptors. Because when you get a raw material like a student, when you teach them and you train them from here, one day they become minister, MLA, engineer, another film actor, a heroine, whatever it is there. You are the sculptors, number one. Today I feel very happy to come out here for 2 reasons. One is once a time, 40 years back, in classes we used to sit in the last seat. We used to listen some teachers, high school, and the college and degree in Usmania University, Hyderabad. So today I came from last bench to on the desk. We are talking that we should remember our past. We should not boast that we are a great person. Because we should remember our foundation. लोगों को एक थाली में, कभी कभी चांदी की थाली में भी कुछ अशार या कोई धोती, उसके साथ कुछ दक्षिणा, उसके साथ पान मतलब तो पहले किनको देना? पूरी कागज बैठे फिर ग्रेडिंग आ जाए. इसमें सबसे बड़ा पंडित कौन है? पहले हम अग्रश्रेणी को, टॉप ऑफ द पीपल, उनको देके फिर ऐसा अभी हम लोग बैठे. पहले किनको देना है?
Suppose Navin ji कहाँ पे अभी यहाँ के हम बैठे बोल रहे थे फ्रेश बाबूराव साहब. This is 2022 New Delhi. Is Mr. J.C. Chaudhary, Chairman INF International Immunology Forum, New Delhi. इनके मतलब 8 स्टेट में US, UK, दुबई, ऑस्ट्रेलिया इनके ब्रांचेस में हो. Is a Guinness Book World Recorder. There are still people thinking that it must be somewhere US or UK like an international seminar. Recently I proved this book is belongs to MGK and I will do this Bharateshan Savana mission. And ये सब format हुआ and we are using day-to-day life astrology. But coming to astronomy, it's only a subject of some remote scientist. कहाँ बैठे लर्नर करते जा रहे हैं. हम तो 50 साल से हम देख रहे हैं. Is there any use day-to-day life में कुछ है? Secondly, nearest star is sun. Sun is the prime nearest star is sun. For a question, shortly, I know people they want to conduct an international seminar in Hyderabad also. They asked me for suggestion of being an advisor. So these advisor came. So I एक बार हैदराबाद में करूँ. चले थे 500 astrology in Hyderabad. Astro Miracle 2002. वैसे conduct करेंगे ये. Next. I was working very day-to-day life. Before starting this life, इसके बाद आज whatever the arrangements for a year, आज यहाँ पे है मंच पे the training course my beloved student, among all the 2,500 students, out of 2,500 students. Live example, cricket अब कितने लोग देखते हैं? हम तो नहीं देखते. Yes, I played all the cricket matches also. धोनी number 7. धोनी हमेशा कभी भी इसमें देखते उनके पीछे क्या बोलते जर्सी ना द टी-शर्ट जर्सी के पीछे क्या रहता है सालों भर से खेल रहे हैं मे बी 10-15 इयर्स एग्जैक्ट आई डोंट नो नंबर 7 लिखा हुआ है रिजर्व एंड मूड टोल्ड यू नो कभी गेम में को देखे हमेशा एकदम सीरियस अपोनेंट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट प्लेयर्स क्या करते हैं इनका मूड को देख के बॉलिंग करना पड़ता है इनका मूड हमेशा एक छक्का मार दिया तो भी सेम विकेट गिर गया तो भी एआर रहमान भी नंबर 7 है एआर रहमान वो भी है पर्सनल क्रिकेटर पूछे साहब ऐसा आदत को क्या करूं मैं भेजिए एक साथ सुबह शाम 24 घंटे ऐसे वेरी रिजर्व एंड बॉडी अब शादी के बारे में अभी 5 एंड से स्कूल सेल में अब इन और कुछ फिल्म देखते थे ये जुड़ता ही टोटली ऑपोजिट थिंक आई डिड टोटल रिसर्च ऑन मैरिज कंपैटिबिलिटी मैरिज और एक चीज याद रख लीजिए इसके पहले के युग में कभी आपको शादी के बारे में तो मैरिज डेट शुड नॉट बी 4, 5, 7 and 8. It is 1025 साल से एक बार जरूर मिलेंगे. I hope you enjoy this session. If anybody wants to any feedback on our people, we can leave. जो कर्मवाद में विश्वास करते उनकी मान्यता ये है कि जो भी हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं इस जन्म में उसका फलित मिलेगा किसी भी रूप में. तो अंकशास्त्र अंक गणित आप जो न्यूमरोलॉजी बोलते हैं उससे क्या हम किस्मत बदल सकते हैं? जो लिखा है भाग्य है क्या वो बदला जा सकता है? When Brahmadeva wrote here, finally he will write one thing. I am writing his fate, but he can change his fate according to his activities. Am I right? Yes. How many knows about it? 14. Bharat Ratna Baba Saheb Ambedkar born on 14. So 56. But right, proven. Baba sir also. Really, it is working. One day we went at one place. He said that you must be careful because within few days you may get we were met with an accident. Really, next day, immediate day. It's time to express our heartfelt. Bharat Bhushan Sri Mudigonda Gopi Krishna Garu
our esteemed speaker for graciously accepting our invitation and delivering such an informative and interesting session. Your deep insights into numerology, human behavior and personal growth have sparked new perspectives and left us all inspired and intellectually engaged with your session. Thank you, sir. Thanks to P. Mohan Kumar Gandhi for continued support in our future endeavors. Thank you. Just World famous world record holder Sri Mudigonda Gopi Krishna Garu. Sir has accepted kindly to visit our college and he delivered a wonderful lecture. Our all audience, our all teachers felt very happy. They are telling that they will be beneficial by this lecture. Thank you so much, sir. Thank you very much for accepting our request. हमारा नाम न्यूमरोलॉजिस्ट भरत भूषण न्यूमरोलॉजिस्ट गोपी कृष्णा और हैदराबाद से आज ए मंच से हमसे बात करें। सर, आज आपको यहाँ पर अग्रवाल शिक्षा समिति आकर यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के लोगों से मिलकर कैसा महसूस हुआ सर? आने से पहले लोगों को कुछ नई चीज़ थी, न्यूमरोलॉजी क्या होता क्या बताएंगे ऐसे सोच बैठे थे लोग, मगर लगातार 2 घंटा स्पीच सुनने के बाद वो न्यूमरोलॉजी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, अपने जीवन में कुछ सुधार लेके आ सकती है बोल के लोग समझ को फीडबैक भी दिए थे। उनके जीवन में ऐसी फॉर्म जो उनको बताए उनको बहुत अच्छा लगा और 100% टैली भी उनको हो गया। तो एक नई चीज़ वो पहली बार लोग देख रहे थे, तो ये उनका फीडबैक था। और आज इसके जो सेमिनार संघीय सेमिनार में यहाँ के जो है मैनेजमेंट तरफ से जो चीफ सेक्रेटरी चीफ सचिव नवीन जी भी आए थे, नवीन अग्रवाल जी, तो साथ में हमारे साथ मंच से बैठे थे कुछ देर तक। वो भी मतलब कुछ समय तक, तो उनके बहुत बिजी आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो समय तक मतलब घंटा 2 घंटा बैठे थे। वो भी बहुत संतोष प्रकट किया कि अच्छा न्यूमरोलॉजी ये चीज़ ऐसा ही है। बहुत लोगों को कम इसके अंदर ज्ञान था, आज वो भी बहुत संतुष्ट हो गए थे। वो एक्सप्रेस किए थे भाई रियली न्यूमरोलॉजी इज डूइंग वेरी गुड, चेंजिंग लाइफ, इज़ वेरी यूजफुल टू डे टू लाइफ, बिल्कुल उनको हमसे कहा है। वेलकम टू ऑल। आज इस मंच पे हैं अग्रवाल शिक्षा समिति कॉलेजेस की हालत, यहाँ पे मतलब इन्वाइट किया गया है। कॉलेज के यहाँ के जो प्रिंसिपल है बाबूराव जी ने उनको इन्विटेशन लेटर भेजा है। मैं मानकर चली आऊँ तो ये संस्था के मतलब जो मैनेजमेंट भी एक्टिविटी, तो लगातार 2 घंटा न्यूमरोलॉजी मतलब दैनिक जीवन में किस तरह काम में आता है उनको बताइए। इसके अंदर पूरा साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू एंड पर्सनल डेवलपमेंट भी बताया गया कि बहुत लोगों को हमें जैसे भी कि न्यूमरोलॉजी का मतलब केवल लकी नंबर, न्यूमरोलॉजी का मतलब केवल नेम करेक्शन नहीं होता है। जीवन में अपना आगे चल के क्या करना है इंसान से करवा सकते हुए हर आदमी में पॉजिटिव और जो नेगेटिव एनर्जी रहती है उनको मूव कर देते हैं। पॉजिटिव का जो भी अपनी क्वालिटी से बढ़ाओ बोलते हैं, नेगेटिव को कम कर देते हैं। तो आज यहाँ के जो स्टाफ, लेक्चरर्स, जो प्रिंसिपल्स, करीबन 14 कॉलेज के लोग, HODs और प्रिंसिपल सभी लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए थे। सो इससे उनको भी मतलब आज जो भी ज्ञान न्यूमरोलॉजी अपना भाग्य ऋषि ने जो ज्ञान दिए वो आज देना पड़ा, वो लोग भी संतुष्ट थे, मैनेजमेंट भी संतुष्ट था। आई एम हैप्पी तो आज ये जो कार्यक्रम में बहुत हम संतुष्ट हैं। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।